It is a message to the below average students, to the topper students, to the average students. Everything you know in case of English language, something you doesn't know and which I will be letting you know, and also that is the common between all kind of toppers as well as the below average and average students, which is none other than time management. Means everything you know in whatever the question will be coming, what type of question will be coming, how to write, what to write, everything you know. But something you doesn't know, that is all about a time management. How many minutes to take what, how many minutes you have to take to complete those type of question, that you doesn't know yet. Even, and yes people, I am guaranteeing you, I am giving a lots of guarantee towards this, that even 60 to 70% people, they will feel insecure about the time management. But after this video, somehow you will feel relaxed, somehow you will try to think, you will work hard regarding the tips and tricks, regarding the issues which you will be facing during the examination hall in case of ICSE class 10 semester 2 English language paper. So here the mistake number 1 which you will be facing, which you will be doing, that is all about a time management. People, please do not do that. And after this video you are not going to do that also, I know very well, because as you know very well, your exam is going to start at 11 o'clock and you people will be getting sharp 10-50 question paper. 10 minute तुम्हें मिलेगा to read the question paper. Many students are even, I cannot, the way they are they are replying me, sir, we will be starting first letter, we will be starting first email, we will be starting first notice writing. Again I am saying you are in the wrong track again. Do you know why? Suppose for an example, in the first class, whenever we are going to the school, in the first class, पहला क्लास हमेशा फ्रेश रहता है, एंड यू आर डूइंग द फर्स्ट क्लास ऑफ द डे एंड यू आर डूइंग द लास्ट क्लास ऑफ द डे. लास्ट क्लास में क्या होता है, as soon as the bell should ring and I should go to the school, I should go to my home. Similarly the first class is the fresh and you always remain alert. Similarly whenever you will be reaching to the examination hall, whenever you will be looking after the question paper, you will be very fresh. And फ्रेश का मतलब सोचने का कैपेसिटी बहुत बढ़ जाता है. मैं नहीं बोल रहा फिजिक्स बोल रहा. जब एक बंदा फ्रेश रहता है, सोकर उठकर मेमोराइज, क्यों सुबह के 4 बजे पढ़ने के लिए, रट्टा मारने के लिए बोलते मम्मी पापा, डू यू नो, बिकॉज फ्रेश रहता है माइंड और यहां से बहुत अच्छे से स्टोर कर लेता है. सिमिलरली व्हेन एट द 11 o'clock you will be giving paper, it my request to everyone, please go for the composition. People, please go for the composition part. Do not go for the letter writing, do not go for the notice writing, do not even go for the email writing. First try to attempt the composition part, because composition को letter writing तुम्हें आता है, तुम कर पाओगे, notice writing कर पाओगे, email writing कर पाओगे, composition उसका मतलब नहीं कर पाओगे, तुम कर पाओगे, मगर composition में सोचना पड़ता है. सोचोगे कैसे? अगर तुम फ्रेश रहोगे. फ्रेश एक बंदा रहेगा और एक सोचेगा. एक बंदा लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग एज वेल नोटिस राइटिंग लिख चुका होगा, उसके बाद सोचेगा. डिफरेंस बहुत होगा. मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, मैं अगर 10 वीडियो बनाकर फिर से ये वाला वीडियो बनाऊं, डिफरेंस बहुत रहेगा. आई बात समझ में? मोरल ऑफ द स्टोरी, प्लीज डू द कंपोजिशन पार्ट. इवन यू पीपल कैन कंप्लीट ऑल काइंड ऑफ पेपर्स विद इन 75 मिनट्स विद एन इंस्टेंट प्रूफ. आई विल बी गिविंग दैट ऑल्सो. First you people will be getting 10:50 AM sharp question paper, and 10 minutes they will be giving you to read the question paper. And remember always in your entire life, see, every students have different style. I am having different style, other teacher having different style. So I always prefer picture study questions. I always prefer in case of composition, picture वाला होगा मैं अच्छे से लिख पाऊंगा. क्यों? क्योंकि पिक्चर वाला में बहुत सारा मीनिंग आता है. Similarly many people are there, those who want to write story and all. Remember always to complete the composition, generally an excellent, a topper student, he or she generally need 15 minutes. मान लो 20 मिनट. एक अच्छा बच्चा 20 मिनट लेता है, थोड़ा सा कम बच्चा 25 मिनट कर लेते हैं, 25 मिनट करते हैं. अगर थोड़ा सा कम 30 मिनट करते हैं, दैट मीन्स एवरेज आई हैव टेकन 30 मिनट्स. दैट मीन्स टू कंप्लीट द कंपोजिशन पार्ट्स ऑलमोस्ट आई विल बी गेटिंग 30 मिनट्स. आई हैव गॉट द क्वेश्चन पेपर एट 10:50. आउट ऑफ दैट आई हैव गॉट 10 मिनट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर, इन विच, और एक बात हमेशा याद रखो, दैट मीन्स 4 क्वेश्चन इन द कंपोजिशन वुड बी देयर. डू नॉट रिमेन इन पजल. डू नॉट रिमेन इन पजल. अरे ये वाला करूं या ये वाला करूं. जो पढ़ रहे हो एक करो.
और ज्यादा मत पढ़ना. Suppose 4 composition is there, you will be reading 4 questions. Do not do wrong that. अगर 4 पढ़ोगे ना confuse create हो जाएगा. Do not do wrong. Do not read the 4. Do not read first 4 part. Any which one you are comfortable. Suppose I am going for and against the topic. Do that. You are good in for and against the topic. Do that. I am good in picture. I will do that. The picture one. You are good in something to making story. You are good in writing story. You will do that. So whatever you are good in that, you have to stick to the particular topic. You have to make your weapon strong. Remember children, do not read entire question. अगर entire question पढ़ोगे, first of all time loss, second of all puzzle, tension, as well as you people will go and mess up. Do not get messed up during the examination hall. Remember first 10-50 choose a topic and after that you read it thoroughly. 5 मिनट लगा. देन आफ्टर 5 मिनट का लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, एवरीथिंग. अगर एक बंदा लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग नहीं भी देखेगा तो वो भी कर पाएगा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, मिडिल ऑफ द एग्जामिनेशन. 10 मिनट में तुम्हें खत्म हो गया. दैट मींस कंपोजिशन 30 मार्क्स, मिनिमम 20 मार्क्स में सब कुछ खत्म हो जाएगा. कंपोजिशन पार्ट विल गेट ओवर एट 20 मिनट्स. Take it as a 30 minutes. That means somehow you will be getting over at 10:30 a.m. Somehow, sorry, 11:30 a.m. Somehow composition part will get over. Clear? Clear. Departure time is 12:30. 1 hour left within our hand. Again 1 hour left within our hand. What do you have to do in the 1 hour? You have to do letter writing, and letter writing somehow I will be taking only 10 minutes, but I will be giving you 15 minutes letter writing. 15 minutes letter writing. Only very easy in the letter writing. Only तुम्हें लगता है अगर मैं कैलकुलेशन करूं सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, डेट, दिनांक सब डालकर मैक्सिमम आई विल बी टेकिंग 4 मिनट्स. 5 मिनट सब कुछ लिखूंगा. बॉडी के लिए मैं सोचूंगा, बॉडी के लिए 5 मिनट लगेगा. 10 मिनट ले लो, 15 मिनट में लेटर खत्म. क्लियर बात? 30 plus 40, 15, 45 minutes. After that, notice writing. Notice will be very easy. Notice writing 10 marks. Email writing 15 minutes. 15 minute email writing. 30 minutes composition. 15 minutes letter writing. 10 minutes notice. 10 minutes notice. At the end I will be getting 15 minutes email. 15 minutes email में थोड़ा है कचरा, मतलब email में थोड़ा गप्पा पर लिखना है. टोटल if I will be counting somehow 30 plus 30 16 70 minutes. कितना? 40 30 70 मिनट में खत्म. 70 मिनट्स में खत्म. मोर 20 मिनट्स लेफ्ट विद इन योर हैंड. मोर 20 मिनट्स लेफ्ट विद इन योर हैंड. दिस इज द कंप्लीट सिनेरियो व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, स्टार्ट राइटिंग नाउ राइट नाउ. टेक एनी सैंपल पेपर, ईमेल राइटिंग, फिक्स अ टाइम एंड डू इट राइट नाउ एंड यू विल बी गेटिंग. अगर इसमें से तुम ज्यादा लेते हो, इफ यू आर टेकिंग मोर मिनट्स फ्रॉम दिस सिनेरियो, definitely you are going to face the problem in case of language paper. You will be going to face. You are supposed to going to face, but now you will be not going to face because I have made you aware. I have made all kind of concept. Yes sir, कुछ तो कुछ बोल रहे थे, and this is not your fault. This is not my fault. This is the fault of COVID-19. This is the fault of semester 1 because you have done tick, right? You did not do any kind. You did not have a lots of practice. You have to do that. And people, again I am not saying everything is humor. I am saying according to the calibrity of students. Students will definitely take 30 minutes. 40 मिनट अगर भी लगा ना कंपोजिशन में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तुम्हारा नंबर बहुत है, यहाँ पर टाइम बहुत है. रिमेंबर ऑलवेज, फर्स्ट यू हैव टू डू कंपोजिशन पार्ट टू स्कोर 40 out of 40. Composition is something you have to think. Composition is something you have to express. Composition is something you have to express your inner built quality. Composition is something you have to bring all kind of good words, all kind of words, proverbs, phrasal verbs in, and you have to put it inside the composition. And how you will be bringing? You will be thinking. You need a time. You have to remain fresh. When you will be remaining fresh? You will be remaining fresh at the starting of the examination, not at the end of the examination. At the end of the examination में ये सब भारी लगेगा क्योंकि तुम पेपर देखे आ रहे हो, right? So moral of the story, remember always, and I always do, I will be letting all my children do that. Even whenever I am giving exam also, now also I am student, I am giving exam, I always prefer composition past because we are fresh. Whenever a student is going into the examination, वो लोग fresh रहता है और fresh में बहुत कुछ सोच सकता है. And composition first, take 30 minutes composition, then after go for the letter writing, 15 minutes you take, 20 minutes you take
कमांड 50 मिनट का खत्म हुआ, 10 मिनट तो नोटिस राइटिंग, 10 मिनट बहुत है नोटिस राइटिंग के लिए, 60 मिनट का खत्म, 15 मिनट्स ले लो ईमेल राइटिंग, 75 मिनट्स में खेल खत्म, 15 मिनट और हाथ में है, अगर 15 मिनट हाथ में है उसके बाद तुम्हें कंपोजिशन लिख लेना. एंड बिफोर डिपार्टिंग लेट मी से लिटिल बिट मोर थिंग दैट in case of notice writing or in case of story writing, if you don't know anything about title, about topic, about end title, अगर तुम्हें कुछ टाइटल नहीं मिल रहा है स्टार्टिंग में, उसके लिए जगह छोड़ दो, लिखना शुरू करो, अंदर से तुम्हें टाइटल मिल जाएगा. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आई एम सेइंग यू पीपल, इफ यू आर राइटिंग एनी काइंड ऑफ कंपोजिशन पार्ट, इफ यू आर राइटिंग एनी काइंड ऑफ नोटिस राइटिंग पार्ट, लेटर में तो नहीं होता, नोटिस राइटिंग और इवन इफ ईमेल, if you don't notice में जनरली तो टॉपिक रहता है, if you don't know the topic and title, what you have to do not ignore, start doing that. बीच में जब लिखोगे ना तब याद आ जाएगा, बढ़िया टाइटल याद आएगा. इतना मेरा why I'm saying this, because I'm having such kind of experience, because I used to do this and I used to bring a very innovative title. Thank you very much. Signing off for today. Remember, composition first, letter at the end, third after notice, fifth after email. After that composition 30 minutes, composition 30 minutes, letter writing 15 minutes, ईमेल राइटिंग 10, नोटिस राइटिंग 10 मिनट, ईमेल 10-15 मिनट ले लो, 75 मिनट में चकमाचूर करना है. गॉड ब्लेस ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू ऑल, एंड आई एम वेरी अपसेट दो यू विल बी गोइंग, फ्रॉम ऑल इज योर्स. थैंक यू वेरी मच.